हेलो हेलो hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lecture for 10th standard algebra. In 10th algebra we are doing the 6th chapter, that is statistics, and today we are going to do the 4th part of it, that is set practice set 6.2 उसका 4th question. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका 3rd क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब इस लेक्चर में हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. नाउ बिफोर आई प्रोसीड, a brief recap of what we were doing in the previous lecture. previous lecture में हमने ये practice से set 6.2 जो है उसमें हम क्या करते हैं, we find out the median of the grouped frequency distribution. We find out the median of the group frequency distribution, isn't it? तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं. We find out the median of the group frequency distribution और उसके लिए फॉर्मूला क्या है. Let's have a look at this formula. The formula that we make use of here is ये रहा formula. This is the formula that we make use of while solving the question. Okay, ये है वो formula. Let's paste the formula over here. And what are the details about the formula? These are the details about the formula. Okay, here's formula के details. Okay, so यहाँ पे now L is the lower limit of the median class, H is the class width, F is the frequency of the median class, and CF is the cumulative frequency of the class preceding median class. ये फॉर्मूला यूज करना है हमें और ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, लेट्स गेट गोइंग फॉर दिस नाउ. The production of electric bulbs in different factories is shown in the following table. Find the median of the production distribution. हमको इसका मीडियन चाहिए. तो पहले तो ये चेक कीजिएगा कि क्या ये जो डेटा दिया है वो कंटिन्यूस है. यस, कंटिन्यूस. सो आई विल राइट हियर द फर्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी द क्लास. ओके, क्लास. What will be the second column? Class मतलब यहाँ पे number of bulbs in thousands, right? Number of bulbs in thousands. So I'll just write here. Class months means number of bulbs in thousands. Sorry, can you close the diagram? Okay, so here it is given as 30 to 40,000. Then 40,000 to 50,000, isn't it? Okay. उसके बाद 50,000 to 60,000, 60,000 to 70,000, 70,000 to 80,000, और फिर 80,000 to 90,000 and 90,000 to 1 lakh. Then we have to have the second column. क्या होगा इसका? Frequency. Frequency will denote it by FI. FI means वहाँ पे number of factories है. Number of factories. तो क्या है frequency जिसके 12, 35 factories, 20 factories, 15 factories, 8 factories, 7 factories and 8 factories. And then the last column is going to be cumulative frequency less than or equal to type. Cumulative frequency CF less than और क्या लिखना है उसको? Less than the upper limit type. Less than or equal to होना चाहिए ना, और we'll simply say here less than type. Less than type, that is also okay. So ये रहेगा हमारा. Now this is to be carried as it is. 12 will be carried as it is here. So this is 12. फिर इसमें हम ऐड करेंगे 35. ये कितना बनेगा यहाँ पे? It will become 47.
plus 20, 67 plus 50, 82 plus 8, 90 plus 7, 97 plus 8. So in all there are 105 factories. Okay, well, let us prepare the table over here. ठीक है, इस तरीके से हमने टेबल तैयार कर लिया इसका। अब क्या करना है, we have to add this all. So when I'll add this all, this will become summation f which is equal to n, and that is equal to 105. ठीक है, now 105, so what is n upon 2? That is 105 upon 2, so 52.5. that means approximately 53rd रीडिंग कहाँ पर आएगा वो हमको चेक करना है, isn't it? We have to check for the number is 52.5. ये कौन से इसमें है वो 50 to 60 में आएगा. So we have to median class क्या होगा इससे, median class is 50 to 60. ये हमारा median class होगा. Let us mark the median class. After marking the median class, we'll say this is the median class. तो अब हमें वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. What is median is equal to, median is equal to L plus n by 2 minus CF whole thing divided by F या H, F into H. यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा here what is L, lower limit of the median class 50, n by 2 is 52.5, correct? Then cumulative frequency of the class preceding median class is 47. यहाँ पर ये होगा तुम्हारा cumulative frequency, this is the frequency and this is the lower limit. Okay, H is equal to 10 आएगा इसका, correct? यहाँ पर मैं बोलूँगा H is equal to 10. Frequency of the class preceding the median, frequency of this median class is 20. Let me just substitute here. This L is equal to 50 plus n upon 2, 52.5 minus 47, something divided by 20 into 10. इसमें से ये cancel हो जाएगा 0. This will give me 50 plus 5.5 upon 2. So this is 50 plus कितना आएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 7 जा 5. So this is equal to 2.75. So the median of this frequency distribution 52.75. That is the answer. Is this okay? 50,000. यहाँ पर 1000 लिखना पड़ेगा. मतलब कितना आएगा? Therefore median is equal to 52,750. 52,750. These many lamps. Is this clear to you? Any doubts about that? Okay, let's proceed further now. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे. So now we have to go for mode on of the mode में हमने क्या क्या किया यहाँ पे इसके पहले मीडियन और मीन. So now we are going to talk about the mode of the frequency, group frequency distribution. The next topic here, mode of the group frequency distribution. तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और फिर उसका फॉर्मूला. बाय द वे मोड के लिए फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोड. मोड के लिए फॉर्मूला है मेक यूज ऑफ दिस. इसमें L इज द लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. यहाँ पर हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करना होता है.
frequency of the model class f1. f0 is the frequency of the class preceding model class, and frequency of the class succeeding model class. H is the class interval of model class. That's very simple. और बस आपको अभी how do you find out the model class here? So example में देखते हैं how the mode is estimated with the help of this formula. Let's see. This is the example that we are going to use, that we are going to follow. So let's have a look at this example now. ये एक example है. The classification of children according to their age is playing on the ground. The ground is shown in the figure, following figure. Find the mode of the ages of the children. Now this is the distribution is given here. Age group, from the table we know that the maximum number of students. Mode क्या है? The maximum number of entries. तो यहाँ पर हमें maximum number क्या होगा वो देखना पड़ेगा. The maximum number of children is out of age group. So यहाँ पर model class कौन सा होगा? Which is the maximum here? Yes, this is the model class. ये तुम्हारा होगा मॉडल क्लास. वी कॉल दिस एज मॉडल क्लास. क्या बोलते हैं इसको? मॉडल क्लास. दिस इज द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास इज द क्लास विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. इज दिस ओके? तो यहाँ पर ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज f1, f0, f2, h etc. Is this okay? That is very simple, and then we just have to substitute in the formula and get the answer. So with this we'll start with the question. We have to do question. Okay? So it is practice set 6.3. We go for practice set 6.3. Okay. Here we go. Okay. So let's have a look at this now. The following table shows the information regarding the milk collected from the farmers on the milk collection center and the content of fat in the milk. Content of fat in the milk. So let's start now. यहाँ पर मॉडल क्लास हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कौन सा होगा? The one which is having maximum number of frequency. Frequency maximum कहाँ पर है? This is the formula. This is for milk collected in liter. This is the class. और ये है तुम्हारा frequency Fi. So frequency is seen to be maximum for which class? It is for this class. So we say this is the model class. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? Model class. This is the model class. अगर ये model class है तो what is the lower limit of this model class? 4. This is f of 0, f0, sorry f1. ये होगा तुम्हारा f0 और ये होगा तुम्हारा f2. And what is h is equal to? Upper limit minus lower limit, that is equal to 5 minus 4, 1. Well, that's it. Correct? So we'll use the formula for mode now. What is the formula for mode? Mode is equal to, बताइए, mode is equal to L plus, क्या फॉर्मूला है? f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h. This is the formula. Let us substitute here in this. That is so easy. Therefore this is equal to L is equal to 4 plus, बोलो क्या आएगा? f1 is 80 minus 70 divided by 2 times 80 minus 70 minus 60
into h is 1. So कुल मिलाकर क्या आएगा देखते हैं. This is equal to 4 plus 10 upon 160 130 30. So this is equal to 4 plus 1 upon 3, that is 4 plus 0.3333, and therefore mode is equal to क्या आएगा. Mode is equal to 4.33. 4.333, that is the answer. Any doubts about that? That is so simple. 4.33. They are saying content of the fat. So this is content is in percentage. So I'll say mode is equal to 4.33%. Is that clear? We go for the next question here now. Question number 2. I hope this is clear to you. Good. Next. Here on my screen for the next question. Okay. The electricity used by some families is shown in the figure. Find the mode of the use of electricity. Use of electricity units and number of families. So this is basically for the frequency, and I can make out what is the model class from here itself. Model class here is equal to having the maximum frequency. So I'll say this is the model class. Is this okay? So I would say this is the model class, and it is denoted by model class. Model class. So यहाँ पर what is the lower limit of this model class? 60. What is the width of the model class? 80 minus 60, and that is equal to 20. What is f of 1? This is f0. Frequency of the class preceding model class and frequency of the class succeeding model class. The mode is given by the formula. Mode is equal to बोलिए L plus f1 minus f0 divided by 2 times f1 minus f0 minus f2 into h. Correct? So this is the formula for mode. Let us substitute here. In this formula, what we get there? That is equal to L 60 plus क्या आएगा? It's 100 minus 70. 2 times 100 minus 70 minus 80 into h. तो क्या बनेगा ये बताइए. This is equal to 60 30 upon 140 150, that is 50 into 20. So this will be 0 0 is gone and 5 4s are 20. So this is 60 12 72. So the mode is equal to 72. हमने किसका mode? Units of electricity. 72 units is the answer. Is this okay? That's the answer. Any doubts about that? Okay, we'll go for the next question. Question number 3. Any doubts about this? Are you understanding that? Great. Question number 3 देखते हैं यहाँ पे. Same group frequency distribution is given here. Of supply of the milk to hotels, and the number of hotels is given in the following table. Find the mode of the supply. Number of hotels मतलब ये होगा तुम्हारा frequency. So from here I can easily make out what is the mode. 35. ये होगा तुम्हारा model class, right? If that is the model class, then we have to write down what is model class. Frequency of the model class is f1. Frequency of the class preceding model class f0. Frequency of the class succeeding model class f2. L, the lower limit, is given by L is equal to 9 and H is equal to 11 minus 9, that is equal to 2. The formula for the mode is given by mode is equal to L plus f1 minus f0 divided by 2 times f1 minus f0 minus f2 into h. So the formula for the mode. Therefore, mode is equal to L. 9 is 9 plus f1
35 minus 20 whole thing divided by 2 into 35 minus 20 minus 80 into h is 2. So that will give me 9 plus 15 upon 38. That is 32 into 2. So 2 16 are 16 15 upon 16. That will be 9 plus क्या आएगा ये 16 ones are 16 0 150 हो गया 9 दा 144 6 बचा 60 3 48 48 12 बचा 120 7 दा 8 बचा 80 5 दा. So this is 0.9375 and therefore mode is equal to 9375. This is liters of meter. So this is in liter. That is the answer for the mode. I hope this is clear. Any doubts about that? Okay. Yeah. 9.94 they take 937. It's the correct answer. Go for the next question. So we go for the question number 4 here. Same type. Ekdam same type. The following frequency distribution gives the ages of 200 patients. Number of patients 200 pata. Treated in the hospital in a week. Find the mode of the ages of the patients. Find the mode. Number of patients है ये frequency F5 होगा. And I have to mark here the model class having the maximum number of entries. So this is the model class we say. Having the maximum number of entry, that is a frequency. ये होगा तुम्हारा model class. Model class जिसका frequency is F1. F0 is the class frequency of the class preceding model class. F2 is the frequency of the class succeeding model class. The lower limit of the model class is 10 and the width of the class here is 14 minus 10, that is equal to 4. So the formula that we have, mode is equal to L plus minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So ये formula है mode का. Let me substitute here in the formula. This will give me L. It's 10 plus F1 50 minus 32 divided by 2 into 50 minus 32 minus 36 into H. It's 4. So that is equal to 10 plus 18 into 4 divided by 100 minus 98. No, 68. 68 मतलब आएगा 32. बराबर है क्या? इज इक्वल टू 32. उसको डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 4 नहीं है, ये गड़बड़ किया हमने. इट्स नॉट अ कंटिन्यूस डेटा, तो अपने को चेंज करना पड़ेगा. मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट? चलो देखते हैं ना, अभी कर लेते हैं, कोई नहीं. Let us erase this. We have to convert this table into continuous classes. Okay. So we'll say, after making the class continuous, to make classes continuous. क्लास कंटिन्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? क्लास एज, क्लास, we can simply say this is age in years. फिर उसको मैं क्लास में कन्वर्ट करूँगा, क्लास, और फिर हर एक क्लास का फ्रीक्वेंसी मुझे लिखना, फ्रीक्वेंसी in the form of number of patients. चलिए इसको बना देते हैं. एजेस इज, हाँ ये इन्होंने दिया है लेस देन 5,
लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब है 0 to 4 and how many patients are there? 0 to 4, 0 to 4 बोल सकते हैं, राइट 0 to 4, लेकिन फिर मुझे फ्रीक्वेंसी को भी बाद में लेना पड़ेगा, देखते हैं कैसे. सो हाउ मेनी आर देयर लाइक दैट? 38, लेकिन इसको मैं कैसे लिखूंगा? 38 इज फाइन. अच्छा, लेस देन 5 इतना है, लेस देन 5 मतलब 0 to 5 बोल सकते हैं. तो द क्लास इज गिवन एज 0 to 4, बराबर है क्या? 0 to 4 लेना पड़ेगा मुझे क्लास. फिर अगला है 10 to 14, नहीं 5 to 9, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, फिर 20 to 24, 25 to 29. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 0 to 5 जो है ना, और इसमें तो इसको हाफ से बढ़ाने का और इसको हाफ से कम करने का, इसको हाफ से बढ़ाने का, इसे हाफ से कम करने का, इसको हाफ से बढ़ाने का, इसको हाफ से कम करने का. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अप टू 5, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा ना. नहीं, ये लेस देन 5 दिया है ना रे, लेस देन 5 इज ट्रीटेड एज 0 to 4 है ना. अब मुझे क्लास में उसको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे कंटिन्यूस क्लास. और ये ठीक है ना, तो इसको हाफ से बढ़ा दो तो ये आएगा 0 to 4.5, ये आएगा 4.5 to 9.5, इसमें कम 9.5 to 14.5, this is 14.5 to 19.5, this is 19.5, 24.5, 24.5, 29.5. Is this okay? ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूस डेटा. और फिर मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना. तो 38 के बाद क्या आएगा? 32, 50, 36, 24. ओके, सो लेट मी कॉल दिस एज F5. और अब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं. Which is the maximum frequency है? 50. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही हमारा क्या होगा? मॉडल क्लास. यस, सो लेट मी मेक दिस एज द मॉडल क्लास. दिस इज द मॉडल क्लास. ओके, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? सॉरी, ये नहीं, 9.5. दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, करेक्ट. और ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, this is F0 and this is F2. H is the width of the model class. H is equal to 14.5 minus 9.5, that is 5. Let us write down the formula for mode. This is the formula for the mode. मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. क्या बनेगा बताओ? L 9.5 plus F1 50 minus 32 times 50 minus 32 minus 36 into H is 5. So that is equal to 9.5 plus 18 into 5 divided by 100 minus 68, 32. बराबर है क्या? 100 minus 68 is 32. अब इसको कैसे करेंगे? Well, this will be 9 the 16.
So this is 9.5, 45 upon 16. Eight जा, one जा, two जा, five जा. So what is the answer that you get there? 9.5 plus 2.8125. तो इधर आएगा 0 0 0, correct? So what you get there? This will give me that is equal to, mod is equal to 5 to 1, 12.3125. 12.3125. Is this okay? That's the answer. So years, this is in ages. So these many years. Is that clear? So that finishes this exercise. अगला वाला पार्ट देख लेते हैं. Let's see. So this was about the mean, median and mode is done. Now I go for the pictorial representation of data. This we'll go for the next part now. Pictorial representation of data. We'll learn about what is called as the histogram now. We'll learn about the histogram. Histogram. So you need the graph paper for that. So from the next lecture, we'll bring the graph paper. Histogram. To study the following example to know about histogram, ये table दिया है. The net asset value NAV per unit of mutual funds of some companies. NAV 8 to 9, फिर 10 to, तो पहले तो मुझे इसको डेटा को कंटिन्यूसली करना पड़ेगा. We need to make the classes continuous. Let's make the classes continuous. तो इसके लिए भी classes continuous होना जरूरी है. इसको 0.5 से पीछे, इसको 0.5 से आगे, 0.5 से पीछे, 0.5 से आगे, and likewise. Correct? Then this is written. और बस मुझे इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर. देखो यहाँ से ये ऐसा ब्रेक लाइन दिखाएंगे. अगर 7.5 अगर वेस्ट नहीं करें तो 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5 to 13.5 to 15.5, 17.5. और हर एक का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे 520 to 510, 15, 20. तो ये है 20. हाँ, तो एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, इज इक्वल टू 2. 2 क्या है? 2 NAV. 2 these many rupees na for net asset value of the company. So it is 2 lakh, 2 rupees we say x axis, और y axis पर होगा 1 centimeter is 5. 5 क्या है? ये 5 funds we can say. ठीक है, क्योंकि ये this is giving the data of the funds ना, mutual funds. तो यहाँ पर number of mutual funds है 5 mutual funds. Is this okay? And this is how we do it. That is so simple. So with this we'll start with the first exercise. Okay, यहाँ पर note क्या दिया है? Note says on x-axis the mark this is called crink mark. It is shown between the origin and the first class. Okay, it means that there are no observations up to first class. So what does this represent? This actually represents the crink class. चेक करो मैडम आएगा. कैन यू प्लीज गो एंड चेक.
This is called as the crink class or crink mark. Given as the crink mark. I'll continue. So I'll go for the second question. The table below shows the yield of jawar per acre. बाद में पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है. Show the data by histogram. Now here the class is not continuous. What do we say? We have to make, since the classes are not continuous, therefore we make the classes continuous. ठीक है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0.5 से आगे, इसे 0.5 से पीछे, इसे 0.5 से पीछे, इसे 0.5 से आगे, 0.5 से पीछे, 0.5 से आगे, 0.5 से पीछे, 0.5 से आगे, लाइक दैट इट डज. यस और नो? ठीक है. तो इसका हम लिख लेते हैं हिस्टोग्राम के लिए. So I'll say yield per acre. Yield per acre. This yield is in quintal. कहाँ से कहाँ तक है ये? 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9. 9 के बाद 10 नहीं आना चाहिए. फिर 9 के बाद कैसे? हाँ, 10 to 11. करेक्ट. नाउ कंटिन्यूस क्लास करना पड़ेगा. so इसे कंटिन्यूस क्लासेस. हाफ से कम करो, 0.5 से बढ़ा लो, क्या बनेगा ये? 1.5 equal 3.5, 3.5, 5.5, 5.5, 7.5, 7.5, 9.5, 9.5, 11.5. फिर यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी FI 30, 50, 55, 40 and 20. Let us prepare the table here. टेबल हमने तैयार कर लिया. Now I'll need the graph over there. ग्राफ होगा ना इसके अंदर. इससे भी बड़ा कर ले, बड़ा नहीं होता थोड़ा. दिस इज बेटर. करेक्ट. अब क्या करना है मुझे? ये ग्राफ तो मैंने तैयार कर लिया है, बस मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये लेना पड़ेगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो फॉर टेकिंग एक्स एंड वाई एक्सिस. ये रहा एक्स वाई एक्सिस के लिए. So I'll take it over here. ठीक है. बस हो गया.
हो जाएगा इसमें। चलो ठीक है, थोड़ा लंबा ले लो। ठीक है, now this is origin, x axis, y axis। तो कौन से एक्सिस पर क्या चाहिए? x एक्सिस पर यील्ड या कंटिन्यूस क्लास चाहिए। क्लास मतलब व्हाट डू वी कॉल दिस एज स्केल, आई विल राइट हियर स्केल। तो यहाँ पर मुझे वो स्केल 1.5 से शुरू करना है। तो आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस विल बी 1.5। हाँ तो करेंगे ना क्रिंक मार्क। ओके, आई शो हियर द क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क तुमको ऐसा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई स्टार्ट हियर फ्रॉम 1.5, फिर 1.5 से अगला होगा 3.5। तो वो मैंने 1 सेंटीमीटर में ही ले लिया। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 पे ही लूंगा। तो दिस इज 5.5, दिस इज 7.5, this is 9.5, this is 11.5 and मुझे सिर्फ वहीं तक चाहिए ना। yes, now that is nothing but yield per acre in quintal। क्या लिखेंगे? yield per acre in quintal। समझे? it's in this direction, ठीक है। और y एक्सिस पर तो ये 1 सेंटीमीटर के लिए कितना है? 2 यील्ड्स आएगा, है ना। 2 यील्ड्स और 2 क्विंटल, दिस इज इन क्विंटल ना। सो ऑन x एक्सिस आई विल से स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर is equal to 2 quintal। Is this okay? Because this is measured in quintal। On y axis now I'll what I want there 1 2 3 4 डायरेक्ट में लिखूंगा नहीं, 10 20 30 40 50 ऐसा लिखना पड़ेगा। 55, so I'll say take this as 10, this is 20। तो on y axis क्या लिखेंगे? क्या है ये 10? इसका यूनिट क्या है? 10 फार्मर्स। तो 10 20 30 40 50 and 60। Is this okay? बस अब मुझे क्या करना है? मार्क करना है। तो ये पहला है 30 तक ही जाएगा पहला। फर्स्ट इज गोइंग टिल 30, राइट। सो यहाँ पे मैं मार्क करूंगा पहला वाला 30 तक, ठीक है। सो मार्क हियर इट हैज 30। यहाँ से जाएगा वो और 30 तक ही रहेगा। इज दिस ओके? ठीक है। दूसरा 3.5 to 5.5 50 है। 3.5 to 5.5 इट इज 50। सो आई विल टेक दिस एज 50 तक। ये यहाँ नहीं, शेडिंग करने का सिर्फ नॉर्मल। फिर अगला है 5.5 to 7.5 55। The next is up to 55, so I'll just mark it from here, it is up to 55। तो 50 और 60 के बीच में आएगा वो, करेक्ट। ये 55 आ गया। फिर उसके अगला वाला कौन सा है? 7.5 to 9.5 is 40। 7.5 to 9.5 it is 40। 40 मतलब सिर्फ यहाँ तक है। समझे क्या? ये चिपक क्या आएगा? इसको भी चिपकाऊं, समझे? फिर अगला आएगा क्या है? 20। ये 9.5 to 11.5 20 तक है। तो ऐसा that's it, that's the histogram। any doubts? you just have to share it and that's it। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्टोग्राम इज ओवर। समझे? आज हमने एक पूरा एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, बहुत सारा
करेक्ट? हाँ 45 मिनट्स 47 मिनट्स में, ठीक है। सो बाकी के क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन अगले टाइम आते समय तुम्हारा ग्राफ पेपर या ग्राफ बुक लेके आना है, तुमको ये मुझे दिखाना पड़ेगा, आप लोग मुझे दिखाओगे, राइट? ओके, सो दैट्स इट फॉर द टाइम, वी विल स्टॉप हियर एंड नाउ यू विल गो फॉर केमिस्ट्री के लिए आप जाओगे, ठीक है। ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।